Okay, so in ionic equilibrium, this part is not there in the syllabus. Introduction, that's just a small part. Anyways, that doesn't affect much. Acidity, basicity, and neutrality of aqueous solution. That is with respect to the pH values. Then properties of buffer is cancelled, but the mechanism of buffer, the types of buffer is there. And 3.10.1 common ion effect and solubility. The small section about the common ion effect and its relation with the solubility is cancelled. So overall, there are just few topics which are not included. तो ये सारे topics से actually कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, because then to solve the numericals of the related major topics, you need to have the concepts. तो overall इस chapter से ज़्यादा कुछ delete या फिर reduce नहीं किया गया है. Just for the namesake, few of the topics are not included, but that doesn't affect much with regards to the overall chapter. Okay, sir. Okay, let's start with the numericals. 3.1. A weak monobasic acid is 0.05% dissociated in 0.02 molar solution. Calculate dissociation constant of the acid. Now, dissociation constant of the acid and dissociation constant of the base are basically the equilibrium constants, which are represented by Ka and Kb. Ka is the dissociation constant of acid and Kb is the dissociation constant of base. Both are equilibrium constant and derived by Ostwald's dilution law. And the final relation which we obtain is the equilibrium constant Ka or Kb is equal to alpha square C upon 1 minus alpha, where alpha is the degree of dissociation and C is the concentration. So यहाँ पर we are supposed to find the Ka and we are being given the values of alpha and C. So if I look at the given data, 0.05% का मतलब होता है the alpha value will be 0.05 divided by 100. So in the standard notation, this alpha would be equal to 5 into 10 raised to minus 4. 5 into 10 raised to minus 4, and the concentration is given out to be 0.02 molar. So alpha and C are being given. So now, as per Ostwald's dilution law, we are supposed to find the dissociation constant of the acid, which is given by alpha square C upon 1 minus alpha. Now, यहाँ पे many a times the alpha value, the degree of dissociation is very small. So if the value is very small, then as compared to 1, it can be ignored. Then in this case, the formula can be approximately taken as alpha square C, meaning 1 minus alpha can be approximated to 1. ठीक है, तो जब अल्फा की वैल्यू 10 पावर माइनस 4 या उससे लेस होगी, then you can ignore alpha. Okay, So sir. if you look at the value of alpha, it is 5 into 10 power minus 4. Minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. SC अगर lower values है, then you can directly ignore because that will not affect your answer much. मतलब in this case, just you can write the statement since alpha का value is very small, 1 minus alpha is approximately 1, and that's why the dissociation constant of acid is alpha square into C. The calculation now becomes simple. It is 5 into 10 power minus 4 the whole square into the concentration is 2 into 10 power minus 2, and it is simple now. 25 into 10 power minus 10 total into 2 है ना, ये minus 8 or minus 2, and finally 100 into 10 raised to minus 10 would become 10 raised to minus 8, and this equilibrium constant is unitless, so this is your final answer. Sir, into Clear? 50, no? 25 into 2 is 100 na, sorry. No, sir, 50. Sorry. So it will be 5 into 10 raised to minus 9 and unitless quantity. So this will be your final answer. Yes, sir. Fine. Yes, sir.
Next, the dissociation constant of ammonium hydroxide is 1.8 into 10 power minus 5. Calculate its degree of dissociation in 0.01 molar solution. So यहाँ पर, if you look at the data, this is the value of KB. Kb, and this is C. C. So finally, alpha ka value, again, you can find out using the Ostwald's dilution law, which is Kb equals to alpha square C upon 1 minus alpha. ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा आपको फाइंड करना है, तो यू कांट अप्रोक्सीमेट दिस 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1. तो इस केस में एक्चुअली यू आर गोइंग टू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 1.8 into 10 power minus 5 equal to alpha square into 10 raised to minus 2 and upon 1 minus alpha. ये 10 power minus 2 यहाँ पर बैलेंस कर लो, तो ये minus 3 हो गया. So finally, it will be 1.8 into 10 raised to minus 3 minus 1.8 into 10 raised to minus 3 alpha, 1 minus alpha multiply कर दिया, and equal to alpha square. Okay. So we get alpha square plus 1.8 into 10 raised to minus 3 alpha minus 1.8 into 10 raised to minus 3, and that would be equal to 0. Okay. Now, using this equation, how do you get to alpha? How do you get the value of alpha? So normal quadratic equation, right? हाँ, it's a normal quadratic equation. कैसे करोगे? If you have a quadratic equation of the type ax square plus bx plus c equals to 0, इसमें x के रूट्स क्या होते हैं? मैथ्स में पढ़ा नहीं है ये? Basically, okay, yeah. Okay. Yes, sir. माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो यहाँ पर a, b and c का values, you can just compare this with the normal quadratic equation. a will be 1, b will be 1.8 into 10 raised to minus 3 and c will be negative of 1.8 into 10 raised to minus 3. ठीक है. Now ideally यहाँ पर अगर आप देखोगे तो quadratic equation के through you would get the accurate answer. But then in textbook and in boards purposes, they tend to approximate this also as alpha square c only. मतलब अल्फा का वैल्यू यहाँ पर अगर बहुत छोटा आने वाला है तो फिर हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. ठीक है. तो टेक्स्ट बुक में इफ यू लुक एट द सोल्यूशन दे हैव डायरेक्टली फाउंड आउट एज रूट ऑफ के बी अपॉन सी. रूट ऑफ के बी अपॉन सी. ठीक है, Yes, वो sir. उन्होंने डायरेक्टली किया है. बट एक्चुअल मेथड में डायरेक्ट नहीं करना चाहिए. यू हैव टू गो थ्रू दिस एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली. ठीक So, है. but in तो boards, can we do it like that? you can do it, but the answer will be approximately lesser as compared to the accurate answer. So Yes, sir. if But they're if they've expecting a done, quadratic equation and if they are expecting a accurate answer, then they might deduct marks. तो ये मेथड करोगे और अगर उन्होंने अप्रोक्सीमेट करके सोल्यूशन में दिया है इन द बोर्ड सोल्यूशन, देन यू विल गेट फुल मार्क्स. so but we can do this now because they've given it in a solved example in the हाँ, textbook only, na? एंड दैट इज द प्रॉब्लम. एक्चुअली वो गलत मेथड है. बोर्ड्स के लिए अगर कर भी दिया तो आई डोंट थिंक वो लोग डिडक्ट करेंगे. बट देन आई हैव टू जस्ट डिस्कस द करेक्ट मेथड. Yeah, agreed. Yes, sir. तो ये वाला एक्चुअली परफेक्ट मेथड होगा. और दूसरा मेथड अगर अप्रोक्सीमेट करते हो तो बहुत सिंपल हो जाएगा. तो अल्फा विल बी इक्वल टू, ये कैंसिल ऑफ कर दो, 10 रेज टू माइनस 3 हो गया. नाउ अंडर रूट है तो यू कैन जस्ट मेक इट एज 18 टाइम्स 10 रेज टू माइनस 4. 1.8 का डेसिमल निकाल दो. तो अब स्क्वायर रूट का 10 रेज टू माइनस 4 को निकाल दो तो 10 रेज टू माइनस 2 हो जाएगा. एंड रूट ऑफ 18 विल बी 0.4 समथिंग. ठीक है. तो फाइनल आंसर विल बी 0.04 समथिंग. Yes, sir.
Okay, so this is the value of degree of dissociation. Either ways, both the numericals were related to Ostwald's dilution law relation with the dissociation constant of acid and base and the degree of dissociation alpha. Next, a weak monobasic acid is 12% dissociated in 0.05 molar solution. What is percent dissociation in 0.15 molar solution? तो एक ही एसिड का अल्फा इस कॉन्सेंट्रेशन पे 12% है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे कितना होगा वो पूछा है. So if the acid remains same, its equilibrium constant Ka will also become Same. same. It will be a Yes, sir. constant. Yes, And sir. for the acid, we know that K is equal to alpha square C upon 1 minus alpha, which approximately is alpha square into C. So since So in K, all these cases, should we just take it as alpha square C only? yeah, Because because in the salt examples also, they have gone through this method only. So boards के लिए, I think you can just go with this method. okay, क्योंकि sir. MCQs जब होता है in case of entrance, if the values are really very close, then you need to go with the quadratic equation method only. Yes, sir. Yeah, तो Okay. boards purpose के लिए, since they have given in the salt example, I think they are not expecting the accurate answer. So it's okay to go with this method. Okay, sir. So for the same acid, K is a constant. Hence, I can write alpha 1 square into C1 equal to alpha 2 square into C2. अल्फा 1 आपको 12% दिया है, which is 12 into 10 raised to minus 2 का square with a concentration of 5 into 10 raised to minus 2. What is the alpha 2 value when the concentration is 15 into 10 raised to minus 2? ठीक है, following. Yes, sir. ये 5 सीधा चला जाएगा and 12 का square would be 144 into 10 power minus 4. ये 3 यहाँ पर आ जाएगा. And now take the square root for the alpha. ठीक है, so 3 4 and 24 48. 48 का nearest अगर आप So देखोगे square root तो 7 6.9, sir. point something. So this alpha 2 is going to be 6.9 into 10 raised to minus 2. That will be the value. Okay, sir. ठीक है, तो ये थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल था जिसमें आपको सेम एसिड के लिए अल्फा इज गिवन एट वन कॉन्सेंट्रेशन, यू हैव टू फाइंड द अल्फा एट द अनदर कॉन्सेंट्रेशन यूजिंग द सेम K relation. Now comes the second part of the numericals, which is calculation of hydronium ion concentration. The H3O plus ion concentration in zero point 0.1 mole dm raised to minus 3 mole per dm cube solution of acetic acid. इतना ही है क्या? हाँ. The Ka value is also given. I think I missed out that. The Ka of acetic acid is given to be 1.8 into 10 raised to minus 5. Given data है ये. Yes, sir. Okay, now सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको थियोरी बता देता हूँ. The H plus concentration of a weak acid is calculated by a formula N into alpha into C, where N is the number of H plus ions of the acid, which is also equal to basicity of the acid. मतलब अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं तो उसमें द नंबर ऑफ डिसोसिएबल H plus ions are 1. 1. One. So N का value will be 1. If I take carbonic acid, it's a dibasic weak Two. acid. So यहाँ पे N की value 2 लेनी पड़ेगी आपको. Okay, sir. अगर H3PO3 फॉस्फोरस एसिड है तो Two. 2. Now H3PO3 is a dibasic acid and not tribasic acid. So the number of dissociable H plus ions from this is only 2. अगर H3PO4 होता तो the N का value would have been equal to 3 because ये Three. tribasic acid है. ठीक है. Alpha is the degree of dissociation and C is the concentration.
अब as per the relation Ka equal to alpha square C, alpha is equal to root of Ka by C. Therefore H plus का फॉर्मूला जो n अल्फा C है, अगर आपको K या Kb वैल्यू दिया होगा तो इट विल बिकम n रूट ऑफ K बाई C इंटू C. अब रूट C और C कैंसिल ऑफ करोगे तो n इंटू रूट ऑफ Ka इंटू C आ जाएगा. This is first formula for the acid. Clear? समझा? Yes. Yes, sir. Yes, Same sir. lines पे for a base, the concentration will be of OH negative. The formula remains the same, N alpha C. But in this case, dissociation constant will become Kb. So it will become N root of KBC. ठीक है? Then इसके related we have third relation, that is Kw, called ionic product of water. So water which is having the ions H plus and OH minus, its ionic product is given as H plus into OH minus. ठीक है? And the K and Kb, the multiplication would always give you the value of Kw, which is equal to 10 raised to minus 14. And this value is only at the temperature of 298 Kelvin. Kw की value is 10 power minus 14 only at 298 Kelvin. Okay, so these are the basic formulas which you will be using for finding the concentrations of the H plus for a weak acid, OH minus for a weak base. And somewhere if Ka is given and the base related information is asked, then to convert Ka into Kb, you just apply the relation number 4, that is K into Kb equal to Kw, where Kw ki value is 10 power minus 14. So now going back to the numerical, the H3O plus concentration is equivalent to H plus only, because जो H plus aqueous में होता है वो पानी के साथ हाइड्रेट होकर हाइड्रोनियम बन जाता है. तो H plus लिखो या H3O plus लिखो, it's one and the same. Yes, sir. So this will be equal to N into alpha into C, but since alpha is not given and K is given, the value, the formula would be N root of K into C. अब एसिडिक एसिड एक मोनोबेसिक एसिड है तो N1 होगा इनटू रूट ऑफ के वैल्यू इज 1.8 into 10 raised to minus 5 into the concentration 10 power minus 1. तो यहाँ पर फाइनली रूट ऑफ 1.8 होगा एंड 10 power minus 6 का अंडर रूट 10 raised to minus 3 हो जाएगा. And then you can solve it and get the concentration with the unit of mole per dm cube. This will be the final answer. Clear? Yes, sir. Yes. फॉर्मूलाज का एक लिस्ट बना दो और टाइप ऑफ न्यूमेरिकल को आइडेंटिफाई करो. दैट शुड बी वेरी सिंपल देन. Calculate pH and pOH of 0.01 molar HCl solution. Now comes the funda of pH and pOH, which was given by a scientist named Sorensen. The pH is called potence of the hydronium ion concentration, which is given as negative logarithm to the base 10 H plus concentration. Same lines पे POH is equal to negative log to the base 10 OH minus concentration. तो अगर H plus दिया है और pH ढूंढना है तो नेगेटिव लॉग लो. लेकिन अगर आपको pH ढूंढना है H plus के थ्रू, then this formula could be also written as H plus concentration is anti-log of minus pH. क्योंकि नेगेटिव साइन लेफ्ट में ले लो और लॉग को उल्टा कर दो, क्या बना? एंटी-लॉग ऑफ माइनस pH, राइट? Yes, sir. And OH minus on the same lines will be equal to anti-log of minus POH. Yes, sir. ठीक है? Done. So ये है आपके important formulas. And pH plus POH is equal to 14. coming back to the numerical, 0.01 molar HCl solution दिया है. मतलब this is the concentration. So the H plus concentration of the HCl would be equal to N into alpha into C.
Now, HCl, H2SO4, HNO3, they are all strong acids. And strong acids के लिए the alpha is 100%, मतलब alpha की value is taken equal to 1. Percentage dissociation is 100, right? So alpha का value in those cases would be 1. तो HCl के लिए यहाँ पर N, it's a monobasic acid. It's a strong acid, तो alpha की value 1. और जो concentration दिया है वही एक्चुअली आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा. ठीक है. Then pH is negative log to the base 10 concentration of the H plus and minus log to the base 10 10 raised to minus 2 minus 2 बाहर निकालो, the answer will be 2. Log 10 to the base 10 is 1. Correct. Yes, sir. And pH plus POH अगर 14 है तो POH would be 14 minus 2 which will be equal to 12. So the Yes, pH sir. of the acid is 2 and POH of the acid is 12. Fine. Got it. pH of a solution is 3.12. Calculate the concentration of H3O plus ion. Now pH is given and you have to find H plus. What was the formula? Anti-log of pH value. Nine. Minus pH value. The H plus concentration when the pH is given is equal to antilog of minus pH. Now antilog of a negative value कैसे ढूंढना है उसका एक ट्रिक है. We can't find antilog of a negative value. We have to convert it into a bar value. And to convert the negative value into bar, the trick is the number before the decimal is to be incremented by 1 and converted to bar. मतलब डेसिमल के पहले 3 है तो उसको 4 Bar करके 4. बार कर दो, मतलब बार 4. ट्रिक इज डेसिमल के पहले whatever number you see एक से बढ़ाकर बार में कन्वर्ट कर दो. And then after decimal, the last number should be subtracted by 10 and before them whatever number of digits you have subtract by 9. ठीक है. तो 2 के लिए यहाँ पर 10 में से माइनस करो तो 8 आ जाएगा और 1 के लिए 9 में से माइनस करो तो 8 आ जाएगा. समझा. एक और एग्जांपल देता हूँ. मान लो आपके पास एंटीलॉग ऑफ -5.2358 दिया है तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट वैल्यू इन बार? Bar 6. बार 6 पॉइंट रिवर्स में 2. 2 4. 4 Oh, then 6. 7. 7. That's it. Okay, understood, sir. नाउ एंटीलॉग तो आप लॉग टेबल से ढूंढ लोगे. सो एंटीलॉग ऑफ 0.88 देखना है. जो भी आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई Then बाय 10 10 raised raised to to -4 4. एंड द आंसर विल बी इन मोलार. तो ये Yes, sir. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है, बहुत स्कोरिंग है. 2 मार्क्स के लिए अगर आता है तो इट इज वेरी वेरी सिंपल टू स्कोर इन दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स. Yes, sir. A weak monobasic acid is 0.04% dissociated in 0.025 molar solution. What is pH of the solution? Now this is a mixture of the part 1 and part 2. है ना. 0.04% मतलब alpha is given Yes, sir. and 0.025 molar. This is the concentration given. Concentration. पहले तो आप H प्लस का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लोगे एज N इंटू अल्फा इंटू सी. बट अल्फा ही दिया है. अच्छा, व्हाट इज N का वैल्यू ओवर हियर? Monobasic, no, sir. It will be 1, right? मोनोबेसिक मतलब N is 1. अल्फा 0.04% मींस 4 इंटू 4 into 10 raised to -2. नहीं, परसेंट है. डिवाइड बाय 100 भी -4. करना है. -4. डोंट मेक दैट मिस्टेक.
4 into 10 raised to minus 4. अल्फा का वैल्यू 0.04% का मतलब होता है डिवाइड बाय 100 ना. Oh yes, sir. Yes, sorry. So overall it will be 4 into 10 power minus 4. And the concentration is 2.5 into 10 raised to minus 2. अब सिंपल है, 2.5 into 4 10 हो गया और ये -6 है तो टोटल 10 raised to minus 5 हो गया. और 10 raised to minus 5 मतलब the pH का वैल्यू इज डायरेक्टली 5. राइट नो. नेगेटिव log to the base 10 H plus का concentration जब यहाँ पर पुट करोगे तो सिंपली यू आर गोइंग टू गेट नेगेटिव log to the base 10 10 power minus 5. बाहर निकलेगा, आंसर विल बी 5. क्लियर. Yes, sir. The pH of monoacidic weak base is 11.2. Calculate its percentage dissociation in 0.02 molar solution. So to calculate percent dissociation यानी अल्फा का वैल्यू, which formula we will apply? So H Hmm. plus concentration of H plus is equal to N into alpha C. Perfect. H plus equal to N alpha C. Now in the data, N is 1, alpha is to be found and concentration is given. Yes, So sir. alpha ढूंढने के लिए basically you require the value of Antilog. concentration. Yes. तो यहाँ पर first part में आप क्या करोगे? The H plus concentration will be found out using antilog of Antilog of minus pH value. pH. So it will be equal to antilog of minus 11.2. Now convert this to a bar value. Bar 12.8. Okay. Sorry. One more thing. This is pH value given for a weak base और percentage dissociation 0.02 molar solution में find out करना है. Now weak base दिया है मतलब here you will not take H plus concentration का formula. Base के लिए we have the concentration of OH. 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 So you will be Okay. taking OH minus equal to antilog of minus POH, Yes, sir. where POH का value now will be equal to 14 minus 3.8. 3.2. Got it? So it will be 2.8. So you will be taking antilog of negative POH and not negative pH. Base दिया है, Okay, right? sir. Yes, So sir. it is negative 2.8. And the antilog value now will be equal to bar 3.2. Yes, sir. So you will get the answer 0.2 का antilog and then into 10 raised to minus 3 molar. And then second part में you will be using OH minus का concentration equated to N into alpha into C. This you know, N is 1, alpha is given, C is given, alpha आप ढूंढ सकते हैं. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Now comes the third part of the numericals, that is related to buffer solution. Properties of buffer is being cancelled, but buffer के types and buffer के numericals are still there in the syllabus. ठीक है. अब buffer का फंडा आपको बता देता हूँ. Buffers are those solution which maintains the pH or pH of a solution. correct. Buffers are those solution which maintains the pH. And there are two types of buffer, acidic and a basic buffer. Acidic buffer is that buffer which is prepared by mixing equimolar solution of a weak acid and salt with a strong base. Yes, sir. So if you have an equimolar solution of acidic acid and you are mixing the salt with a strong base, that is NaOH, then you will get the salt as sodium acetate. इसका जो इक्विमोलर सॉल्यूशन है वो बफर की तरह काम करेगा और its function will be to maintain the pH value. Similarly, a basic buffer is prepared by mixing equimolar solutions of
अब क्या होगा यहाँ पर? Weak base and Weak salt with base, strong acid. salt with strong acid. Give me an example. NH4OH and HCl. So NH4OH plus HCl क्या देगा? What will be the salt? NH4Cl. So NH4OH and NH4Cl का equimolar concentrations will be the basic buffer. ठीक है? अब बफर्स का जो pH and pOH होता है उसके लिए the mathematical equation is given by Hasselbalch and Henderson, and it's famously called Hasselbalch-Henderson equation. And the equation for the buffer is acidic buffer is pH equal to pKa plus log to the base 10 concentration of salt by the acids. Similarly, pOH for a basic buffer will be equal to pKb pKb into plus log 10 salt by base. बस एक फॉर्मूला याद रखा, दूसरा उसके लाइंस पे इजीली याद हो जाता है. ठीक है? Yes, sir. Yes. अब देखते हैं इसका न्यूमेरिकल. Calculate the pH of buffer solution containing 0.05 mole NaF per liter and 0.0515 mole HF per liter. Ka value is given for HF. So you can clearly see it is the weak acid HF mixed with a salt of strong base. Matlab, it is an acidic buffer. Yes, sir. And for acidic buffer, the pH is to be found by using the equation pKa plus log to the base 10 concentration of the salt upon the acid. Yes, sir. अब salt यहाँ पर NaF है, and concentration of a salt is given as number of moles per unit volume, यानी per liter. और अगर आप देखोगे तो as per the data, the number of moles is 0.05 mole and it is dissolved per liter only. तो actually ये directly इसका Concentration. concentration ही है. अब मान लो यहाँ पर dissolved in 2 liter, 3 liter, half a liter या whatever ml is given. अगर per liter नहीं दिया होता, then you would have divided mole and the volume to get the concentration. अब यहाँ डायरेक्टली पर लीटर दिया है तो कोई इश्यू नहीं है, डायरेक्ट ही आपका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा. एंड एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज अगेन 0.015 मोल पर लीटर विच इज मोलार. क्लियर? अच्छा, अब Yes, इस sir. फॉर्मूला के लिए यू रिक्वायर pKa एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड द एसिड. तो दो चीज तो हमें पता है, तीसरी चीज है pKa. अब pKa Ka के वैल्यू से ढूंढना पड़ेगा, which is given as negative log to the base 10 Ka. P prefixed before any equilibrium constant is nothing but the negative logarithm to the base 10. तो चाहे वो pKa हो या pKb हो या pH हो pOH हो, every time you have to just take negative log to the base 10. Yes, sir. Understood. So pKa is negative log to the base 10. The value of Ka which is given 7.2 into 10 raised to minus 4. Open the bracket, you get negative log to the base 10, 7.2. Again, negative log to the base 10, 10 raised to minus 4. अब ये minus 4 जब बाहर आएगा, this will become plus, and finally it will be 4 minus log of 7.2. So just substitute the log value and subtract it from 4, you will get the pKa का value as something. Clear? Yes, sir. अब फाइनली आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में pKa का वैल्यू डाल दो एंड log to the base 10 salt by the acid का concentration डिवाइड कर लो and you will get the correct answer for the pH of this acidic buffer. Okay, sir. Clear? Yes, sir.
Now this is a numerical for calculating the pH of buffer solution composed of 0.1 molar weak base, concentration of the base, and 0.2 molar of its salt Ba, that is concentration of the salt, and Kb का value is given. तो बताओ क्या करोगे यहाँ पर? What type of buffer you observe? Basic. This And basic buffer के लिए what is the formula? POH is equal to pKb plus log 10 concentration of salt upon concentration of base. Perfect. मतलब जब भी बेस की बात होगी ना, याद रखो आप पीएच डायरेक्टली नहीं ढूंढ सकते हो, आपको मिलेगा वैल्यू पीओएच का, एंड देन फाइनली पीएच का वैल्यू 14 में से माइनस करके आंसर मिलेगा. ठीक है, हमेशा याद रखना, दे विल ऑलवेज आस्क यू द पीएच वैल्यू. अगर एसिड के लिए है तो डायरेक्टली यू विल गेट पीएच, बेस के लिए है तो आपको 14 में से माइनस करना पड़ेगा. प्लीज कीप दिस इन माइंड. yes sir. बिकॉज नॉर्मल मिस्टेक्स यही होता है कि यू गेट टू द वैल्यू ऑफ पीओएच, बट देन बहुत लोग उसको पीएच समझ के उसको फाइनल आंसर मान लेते हैं, एंड दैट विल गो इनकरेक्ट. Yes sir. So again we have to do find the pK value, no? pKb value, no? अब जो पीछे किया था Negative एग्जैक्टली log. वही है, ये जो एसिडिक Yes के लिए sir. किया था ना, बस वही चीज यहाँ पर करना है. फाइनल आंसर को 14 में से माइनस करना है, बस. दैट्स Yes sir. ओनली वन स्टेप एक्स्ट्रा. Okay sir. Now comes the third category of numericals, which is related with solubility product. अब फंडा क्या है solubility product का? If I have a sparingly soluble salt like AgCl, sparingly soluble मतलब if I have, let's say, 10 gram of AgCl, and if I dissolve in water, then since it is sparingly soluble, the entire 10 gram is not going to get dissolved. So let's say 5 gram of that salt dissolves in the water. So जो dissolved part है, in that, how will AgCl exist? Whenever a salt is dissolved in water, what It will happens break to... into its ions. Perfect. मतलब जो dissolved part है वो ions के form में exist करेगा, and the undissolved part will exist as the solid only. Yes sir. So As AgCl a का solid PPT. when dissolved in water will form Ag plus aqueous and Cl minus aqueous, and some of the part of the salt will remain undissolved. So over a period of time, there is an equilibrium established between the undissolved solid and its dissolved ions. So at this point of equilibrium, the equilibrium constant is called Ksp, which is equal to the product of concentration of the ions of the salt, meaning the concentration of Ag plus and the concentration of Cl minus. Understood? Yes sir. So now, if for this solid, I consider the solubility of the ion as S. S is nothing but the concentration of Ag plus in the solution. तो जैसे हम मोल पर यूनिट वॉल्यूम concentration फाइंड करते हैं, वैसे ही ये solubility S को फाइंड करते हैं. So S is nothing but concentration only, concentration of the ions in the solution, right? Yes S का sir. यूनिट भी सेम होता है, मोल पर डीएम क्यूब या मोल पर लीटर. ठीक है. So if the Yes sir. solubility of this is Ag plus and the solubility of Cl minus will also be S, then the Ksp is given as the product of the concentration of ions, which is S into S, and that is why it is S square. Yes sir. ठीक है. अब मान लो आपके पास बेरियम क्लोराइड का सॉल्ट है. Again, barium chloride solid would dissolve to give barium Pa ions plus and 2 and 2Cl. 2Cl minus ions. Up, if the solubility of this salt is S, the solubility of barium ion will be S. S, and chloride ion will be
2s. 2s। तो यहाँ पर स्टोइशियोमेट्री अगर आपका 1 नहीं है तो वॉट एवर इज द स्टोइशियोमेट्री accordingly you have to consider the solubility. If it is 2 chloride, it is 2s. And Yes, therefore sir. the Ksp value for this is given as product of concentration of ions raised to the power equal to the stoichiometric coefficient product of barium plus 2 and chloride minus raised to Raised to 1 2. and 2. Correct. Okay, sir. So this will Yes, be s into 2s the whole square. Open up करोगे आपको मिलेगा 4s cube. yes, sir. This is the relation between solubility product and solubility S. Sp is solubility product and S is the solubility. Ab, if Yes, we take the product of concentration at non-equilibrium condition, मतलब जब यहाँ पर equilibrium establish नहीं हुआ है, so in that case, the product of concentration of ions is called IP, that is ionic product. So this is as good as the reaction quotient, which is the equilibrium constant under non-equilibrium condition. yes, sir. जब equilibrium establish होता है तो वही value Ksp के बराबर हो जाता है. But till the point the equilibrium is not established, the concentration product will be called ionic product. Yes, sir. ठीक है. अब ये आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू के बेसिस पे अगर हमें फाइंड करना है कि सल्यूबिलिटी हाई है कि लो है, तो वी हैव टू कंपेयर इट विद द केएसपी. इफ द आईपी का वैल्यू इज इक्वल टू केएसपी वैल्यू, देन Equilibrium is there. द इक्विलिब्रियम इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड. आईपी अगर केएसपी के बराबर ही है तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है. अगर आईपी केएसपी से कम हो, It's not saturated. it's not saturated. Okay, and will the Not at equilibrium. precipitation happen? No, sir. No. अब सुनो, जब आईपी के वैल्यू केएसपी से कम है तो केएसपी इज एन इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब इट इज अ स्टेबल कंडीशन. तो कोई भी सोल्यूशन अगर नॉन स्टेबल कंडीशन में है या अनस्टेबल कंडीशन में है, वो हमेशा स्टेबिलिटी को अप्रोच करना चाहेगा. तो अगर आईपी की वैल्यू केएसपी से कम है तो इट विल ट्राई टू रीच टू द वैल्यू ऑफ केएसपी. और टू ट्राई रीचिंग केएसपी, इट्स वैल्यू मस्ट Increase. इंक्रीज. और अगर आईपी के वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, इसका मतलब ये आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए. और आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट ऑन द राइट और ऑन टू द लेफ्ट. If the On the right. concentration of the ions is Right. increasing, the equilibrium will be on the right. और अगर Yes, राइट sir. पे है मतलब सॉल्ट ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है, और ज्यादा Yes, sir. डिसॉल्व हो रहा है तो हम यहाँ पर बोलते हैं प्रेसिपिटेशन विल नेवर Not हैपन. occur. एंड Yes, sir. अगर आईपी के वैल्यू ग्रेटर देन केएसपी है तो इस केस में टू रीच द इक्विलिब्रियम आईपी का वैल्यू मस्ट Decrease. so the concentration of ions will, Decrease. and because of that the equilibrium will shift on the Left hand side, which will and cause more solidification and precipitation. perfect. And finally the precipitation will occur. Yes, sir. Precipitation occurs. So this is called condition of precipitation. मतलब अगर आपसे कहीं पे पूछा है कि प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा, तो आईपी की वैल्यू कंपेयर करनी है केएसपी से. इफ इट इज ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन विल अकर, इफ इट इज नॉट देन प्रेसिपिटेशन विल नॉट अकर. खत्म. Yes, sir. That's the whole funda about solubility product, and let's do a numerical to understand the concept better. A solution is prepared by mixing equal volumes of 0.1 molar MgCl2 and 0.3 molar Na2C2O4. This is sodium oxalate at 293 Kelvin.
would magnesium oxalate precipitate out? Ksp of magnesium oxalate at 293 Kelvin is given. ठीक है, तो एक solution बनाया गया है by mixing equal volumes of magnesium का chloride and sodium का oxalate. तो जब ये solution mix होगा तो magnesium ions and oxalate ions will combine to form the magnesium oxalate. Yes, sir. ठीक है, तो उस केस में उसका जो आयन का प्रोडक्ट है यानी आयोनिक प्रोडक्ट वो क्या होगा? इफ वी आर एबल टू फाइंड आउट दैट, we have to just compare it with KSP and find out whether the precipitation occurs or not. समझा? Yes, sir. Okay. Now when they say equal volumes are mixed, इसका मतलब जो भी concentration आपको दिया गया है मिक्स होने के बाद it will become Equal. नहीं, it will become half. It will become half. कैसे? ध्यान दो. If I talk about concentration of MgCl2, it is equal to number of moles upon the volume. ठीक है, अब number of moles क्या होता है? Molarity times the volume upon the net volume. इसको हम net volume बोल देते हैं क्योंकि mixing के बाद वाला है. ठीक है, Yes, sir. अब let's say equal volumes में consider the volume of the solutions to be V. Consider the volume of the solutions to be V. ठीक है, तो अगर यहाँ पर मोल्स मुझे फाइंड करना है तो इट विल बी इक्वल टू मोलैरिटी 0.1 टाइम्स द वॉल्यूम अपॉन, now when they mix V volume of MgCl2 and V volume of sodium oxalate, what is the net volume? 2. 2V. Yes, 2V. ये आपका एक सॉल्ट सोल्यूशन है, ये आपका दूसरा सॉल्ट सोल्यूशन है. Yes, sir. दोनों का Addition of both. वॉल्यूम V है, तो ये V है, ये भी V है, तो जब इसको मिक्स करेंगे जो फाइनल 2V. वॉल्यूम होगा वो डबल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Double. ठीक है, तो वही फंडा है कि मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स मतलब नेट वॉल्यूम डबल हो जाएगा. तो अगर नेट वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो अब देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, Half. बस. तो ये डायरेक्ट रिलेशन भी है कि when the equal volumes of two solutions are mixed, its concentration becomes आधा. Half. अब वो आप Yes, sir. डायरेक्टली लिख लो या फिर कैलकुलेशन करके लिखो, नो वरीज, दोनों में सेम ही आना है. अब दूसरे केस में concentration of sodium oxalate will be equal to molarity 0.3, उसका वॉल्यूम V, मिक्स होने के बाद 2V हो गया आधा 0.15. Yes, sir. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में when we say concentration of MgCl2, MgCl2 is going to break as Mg 2 plus 2Cl 1 minus. perfect. तो उस केस में जो भी MgCl2 का concentration है will it be equal to Mg2 plus directly? Not necessary, sir. Might not fully dissociate. नहीं, यहाँ पर जब ये मिक्स हो गया है इसका मतलब ये सॉल्ट्स है, और सॉल्ट्स जो है वो तो कंप्लीट डिसोसिएट ही होते हैं. दीज आर नॉट Yeah, yes, sparingly sir. soluble salts. Yes, sir. Okay. sparingly soluble ये वाला है जो बनेगा, ये Okay, तो sir. फुल्ली डिसोसिएटेड है. Okay. तो देखो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड का अगर S था तो बेरियम का क्या लिया? Ac. So S ही same. लिया. Yes, sir. लेकिन क्लोराइड का क्या लेते हैं? Twice because of the Twice. stoichiometry. करेक्ट. हमें यहाँ पर Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन में इंटरेस्ट है, तो मैं यहाँ पर उसका ही वैल्यू ले लूंगा. Yes, sir. एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम ऑक्सलेट में जब इसको तोड़ोगे Na2C2O4, so it will break down as 2Na plus and C2O4 2 minus. yes or Yes, no? sir. तो अगर Yes, इसका sir. कॉन्सेंट्रेशन C है तो Na plus का 2C होगा, ऑक्सलेट का See here. C ही होगा.
मतलब sir. can I say the concentration of the sodium oxalate is equal to concentration of oxalate and that's equal to Yes, sir. 0.15? Yes or no? Yes, sir. इसको हटा देता हूँ, चलेगा? अब थर्ड पार्ट। तो फाइनली यहाँ पर IP जो होता है IP, इट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस का प्रोडक्ट, यानी Mg2 प्लस एंड C2O4 माइनस 2. Yes, sir. So we have found the ions का concentration as 5 into 10 power minus 2 and 1.5 into 10 power minus 1. कितना आ रहा है? 7.5 into 10 raised to minus 3, correct? Yes, sir. And now I compare this with KSP का value. What is KSP का value given? 8.56 into 10 raised to minus 5. Now compare both the values. So IP is more, so precipitation will take place. खत्म. So since IP is greater than KSP, the precipitation will occur. That's the final answer. Precipitation occurs. Yes, sir. Clear? Yes, sir. The equal volumes of two salts are mixed. Find out the concentration of the salts. And then through that concentrations, find out the concentration of the ions. Through the ions का concentration, find IP. Compare it with KSP. If it is greater, precipitation होगा. If it is less, precipitation नहीं होगा. Is the approach clear? Yes, sir. Next, the solubility of AgBr is given. Calculate its solubility in mole per dm cube and gram per dm cube. तो जैसे मैंने AgCl के लिए बताया था, AgBr भी वैसे ही टूटेगा. Yes, sir. So can I write KSP equal to S into S directly? Yes, sir. And therefore, the solubility to be found for this salt AgBr will be equal to root of KSP, Yes, sir. which is equal to root of 5.2 into 10 raised to minus 13. अब अंडर रूट है तो 10 के लिए इवन पावर कर दो, तो इसको लिख दो 52 into 10 raised to minus 14. So it will be 7 point something 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 into 10 raised to minus 7. The answer will be mole per dm cube. ये हो गया first part, right? Yes, sir. लेकिन apart from this, they are asking you to find gram per dm cube. Now, how do you convert mole to gram? Multiply Multiply by what? molar mass. Very good. Number of moles is equal to given mass upon molar mass. So to get the weight in grams, moles को multiply कर दो किससे? Molar mass. Molar mass से. So solubility in gram per dm cube is equal to whatever answer जो ऊपर आया उसको multiply करो molar mass के साथ और आपके लिए already value दिया हुआ है 187.8 and this will be in gram per dm cube. Yes, sir. ठीक है, तो KSP और S का जो रिलेशन है वो आपको पहले अप्लाई करना है टू गेट सॉल्युबिलिटी. बाय डिफॉल्ट इट्स आंसर यू गेट इन मोल पर डीएम क्यूब and then to convert it into gram per dm cube you have to just apply molar mass relation. Yes, sir. Understood. Next, if 20 cm cube of 0.05 molar barium nitrate are mixed with 20 cm cube of 0.02 molar NaF, will BAF to precipitate? KSP of BAF2 is given. Exactly same है. Yes, sir. बट यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम्स नहीं दिया है, तो मैंने क्या बोला था कि अगर इक्वल वॉल्यूम ना दिया हो तो फिर जो भी वॉल्यूम दिया है उसको मल्टीप्लाई करो मोलैरिटी के साथ एंड डिवाइड बाय द नेट वॉल्यूम. मतलब द concentration ऑफ बेरियम नाइट्रेट would be equal to
the molarity into the volume upon V net volume. Yes, sir. आ रहा है समझ में? Yeah, It's understood. 0.05 into 20 and mix होने के बाद 20 plus 20 कितना होगा? 40. अब एक्चुअली देखोगे तो ये So they are इक्वली मोलार actually equal, वॉल्यूम्स है na? ना? Because so they हाँ, are equal, na? करेक्ट. अगेन यहाँ पर क्या होने वाला है? द कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बिकम Half. half. So similarly, the concentration of sodium fluoride will also become 0.01 molar. Yes, sir. And now the IP ka value would be equal to the barium concentration from barium nitrate and the fluoride concentration from NaF. लेकिन barium fluoride है तो यहाँ पर you have to raise to 2. 2. The barium concentration is 2.5 into 10 raised to minus 2 and fluoride का 10 raised to minus 2 का square करना नहीं भूलना. Yes, sir. फाइनली आ जाएगा 10 raised to minus 2 और minus 4 minus 6. एंड कंपेयर करें 1.7 into 10 raised to minus 6 के साथ तो क्या दिख रहा है? भाई कंपेयर करो. So it's greater. IP is greater मतलब precipitation Will will occur. simple Yes, sir. straightforward numerical. That's it. This completes the numericals, the solved numericals of ionic equilibrium. So Yes, sir. इसमें if I summarize, there are 3 categories of numericals which you have to concentrate on. The first is related with dissociation constant of acid and base versus the degree of dissociation alpha related. Second is the whole concept of pH and pOH related numericals. And third is related with the solubility and solubility product. Yes, sir. इनफैक्ट इसके पहले हमने बफर भी किया ना. थर्ड पार्ट बफर का है और लास्ट पार्ट में सल्यूबिलिटी के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स. Yes, sir. ठीक है. तो अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स को कैटेगरी वाइज क्लासिफाई कर दो and just try working out the numericals of each category. And there are many other solved examples given in the digest. जो भी टेक्स्ट बुक के हैं उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा सॉल्विंग के लिए दिया हुआ है. रेंडमली 2 से 3 न्यूमेरिकल्स पिकअप करो, सॉल्व करो एंड see that you are able to solve the numericals on this part. Yes, Okay, sir. sir. ठीक है. Yes, sir. Yeah.